Thank you, ma'am. First of all, thanks for inviting me, ma'am, for a graduate talk. Basically, the topic that we are covering is over and above graduation level. It is a research topic, but since a few of the students who are carrying out or intending to carry out research, it is possible that you carry out research work further after your graduation, then such kind of research, actually the point is you must understand how a research is carried out. Basically, when you are through to the final year, you go on through for, say, project. So, in that situation, a project requires certain kind of study. It is not normal subject study that you already, most of you are from electronics and undergraduate students. But the point is, when you graduate and you intend to go for further studies, higher studies, and there you require a certain line of research work, and that has got certain steps. So in that way, if we say that we carry out research, don't look at the slides because it is basically electrical pertaining, and very few students will be able to understand the core research part of the electrical engineering part. So I have taken such a topic which will actually, which has got words which you are well versed with, like renewable energy, controls part, which is basically electronics part. And then we have microgrid system. As I am told, there are two types of grid systems. Basically, first of all, you understand what is a grid system. Grid in electrical engineering is basically interconnection of different substations where electricity is being generated. So if we have one, say one power station is there at Sonbhat, Rehan, and another one is there in Dadri. So if these power stations are interconnected, then bilateral transmission of electricity can take place as per the requirement. Wherever there is say deficit in power, and where excess of power is generated, so that transmission can take place. So for that, an interconnection, that those substations or the generating stations, basically they are interconnected so as to fill this gap of demand and supply of electrical consumption. The load is at a different part. If you are, you all are load basically. If I say in terms of electrical engineering, you all are consumers. You are load and highly unpredictable. So in that matter, whatever power is being generated till date, a few decades ago, it was all dependent on non-renewable sources. Not the renewable one. Non-renewable, like we have coal, which is still abundantly available in India because of Deccan Plateau, thanks to that geographical city location. But it definitely it is really, it is getting repeated. It is not getting filled up again and again because it takes decades, years and years of thousands of years to build up coal. So in that situation, the scientists came up with the idea of using certain sources
which electricity can be generated, and those sources are basically renewable in nature. That means they can again and again be used without any say consumption, like solar energy. You all know that solar energy, the sun is easily available in India. We are into that location because we are in between Tropic of Cancer and the equator. So the location of India is very good in terms of getting solar energy. So that location, that harnessing of solar energy in terms of renewable, that is the upcoming field, and solar plants are being already installed by say private sectors and public sectors in India. And in that part, the most difficult part of solar energy is to get a continuous mode of supply, because solar is intermittent. How it is intermittent? Can anyone tell? How it is intermittent? In terms of season, you can see, yes. And day and night. Very good. So at night time, you don't have sun. How much you can put your head, bang your head, but you cannot get solar energy at night. And it will be available during the daytime. The most challenging part is how to get that electrical energy during night time. That is very important. For that, we are coming up with research areas to attach batteries and all. But battery for megawatt power, for gigawatt power, as we are talking about, NTPC is going for generation of gigawatt power. Even Adani is also going for 5,000 megawatt power. So in that situation, 5,000 megawatt, can you imagine how much battery will be required? How many batteries and the space? Is it possible? Like if you have one inverter in your house which has attached one battery, that caters to the need only for 500 VA, as you can see, only 500 VA, and you have a load of say 400 watt. तो उतने के लिए you require 500 का हिंदी में बात कर सकते हैं? Okay. So 500 VA के लिए you require only 400 watt. Right? Similarly, if you are having 1 kVA inverter, so 1 kVA inverter will cater to 800 watts. And now you imagine how many batteries will be required if you are having generation in megawatt, in gigawatt. Right now the electrical generation in terms of solar, it is say around, the government is planning to reach by 2030, it is planning to reach somewhere around 5 gigawatt generation. So right now, itna generation kar pana, it is pretty difficult by any kind of solar power plant along with batteries. But there are improvements which are going on in batteries also in terms of material, in terms of its charging and discharging, etc. As I heard somewhere that China is designing basically gravity battery, which is related to say storing of it is a very reduced concise size of the battery, and it stores energy to a very high power. मतलब ज़्यादा energy store कर सकता है. That is known as gravity battery. It is a latest term which is going on. So control part basically you will be able to understand, because whatever control is done, that is done by electronics engineers only. So these are the publications which are there, but that is not of your concern, because it is the work of my student only. The latest work, she has been awarded with the PhD last year only. So I thought of कि आपको थोड़ा सा latest idea दिया जाए. These were the research objectives which he carried out to design control techniques for islanded and grid interactive three-phase PV, BES. BES is battery energy storage system. Now certain terminologies that you will be able to understand in terms of islanded and grid interconnected. Basically, I told you what is a grid. Now to this grid, we are attaching solar power plant, PV power plant, as an interfacing one. Now what happens is when electricity is being generated by solar, that is generated in terms of DC power, and that DC power is converted to AC, because at house or at homes or appliances or industries they require AC everywhere 220 volt. You all know that कि अगर आपको घर में electricity चाहिए, that should be available at 220 volt, right? Whereas in industries it may require 450 volts, three-phase system. तो ऐसे में आपको 220 volt AC चाहिए होगा, which is not directly available from a PV panel. So what we do is we convert
Inverter. Using an inverter, which is a device which converts. You must be aware of that. आप लोग डायोड रेक्टिफायर पढ़ते हैं, इन्वर्टर पढ़ते हैं. तो इन्वर्टर जो घरों में यूज होता है वो क्या करता है, जो आपकी ग्रिड, जब नॉर्मल ग्रिड होती है उस जो यूटिलिटी जो ग्रिड से पावर आ रही होती है, तो मेन से वो बैटरी को चार्ज करता है, और जब वो मेन्स की पावर ऑफ हो जाती है तब उस केस में वो क्या करता है, इट सप्लाइज फ्रॉम द बैटरी सप्लाइज पावर टू द करस्पॉन्डिंग लोड. तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक आइलैंडेड मोड होता है. आइलैंडेड मोड मतलब केवल डीसी पावर जो पीवी जनरेट कर रहा है जब आपके पास ग्रिड नहीं है. ग्रिड कब नहीं होगी, जब दिन में हमारे पास पीवी पावर अवेलेबल है. देन इन दैट सिचुएशन वी आर डिपेंडेंट एंड वी कैन रन द पावर प्लांट थ्रू आइलैंडेड मोड वेयर ओनली पीवी जनरेशन इज डन थ्रू पीवी. Whereas in case of grid interactive, there has to be the power will be supplied by the grid during the night time. Or if you are connecting a BES, that is battery energy storage, so that deficit of the power will be supplied by BES. That way. So this is how this was the primary objective of ensuring uninterrupted power supply. मतलब आपको गर्मी ना लगे, ये हमारा काम है. आपके सारे काम होते रहे, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल, जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं. So we as electrical engineers are responsible for supplying uninterrupted power to the consumers. Is it clear? And those consumers are basically residential and industrial or commercial ones. So for that, to ensure uninterrupted power loads and to improve power quality of grid and POI, that is point of interface voltage and current. Now in this case, power quality of grid means when you are paying, all of you are paying as a consumer, you are paying tariff. आप पावर ग्रिड से पावर लेते हैं और उसका पैसा आप जितने यूनिट खर्च करते हैं उसका पैसा आप देते हैं. तो जब आप पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यू वांट कि आपको जो भी पावर मिले वो क्वालिटी पावर मिले. क्वालिटी इन द सेंस जितना उसका वोल्टेज होना चाहिए उतना ही वोल्टेज रहे और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उतनी ही रहे. इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप 220 वोल्ट घर पे चाहते हैं कि आपके सारे राइट, एंड इफ यू आर गेटिंग वोल्टेज एट से 210 वोल्ट्स और 200 वोल्ट्स, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तुरंत रुक जाएंगे. जाहिर सी बात है कि 200 वोल्ट पे तो कोई 220 वाला या 190 पे तो काम करेगा नहीं. सो दिस गैप ऑफ 190 वोल्ट between 220 and 190 volt, either you connect a voltage regulator या आप उसको बार-बार जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर जो है कंटिन्यूअसली वोल्टेज को रेगुलेट करता रहे at 220 volts, or else you improve the quality of the power at the source end. कहानी खत्म होती है कि आपने सोर्स एंड पे आपने क्वालिटी पावर प्रोवाइड कर दी, तो whatever tariff that you are paying, the customer is basically satisfied with that. So for quality power, the voltage level is to be maintained at plus minus 10 volt. 10% of the supply voltage, that is say if it is 220 volts, so plus minus 10% variation is allowed as per IEEE standards. And in terms of frequency, we say it is plus minus 1%. So if it is 50 hertz, so the frequency can vary from 49 to 51 hertz. उसके beyond अगर frequency vary करती है, then definitely it is a cause of concern, because it leads to the unsynchronization, you can say, it leads to loss of synchronization between the generators which are working to generate the electricity. So that is avoided because frequency is more important parameter as compared to voltage. Voltage तो आप voltage regulator से control कर सकते हैं, लेकिन frequency थोड़ा सा आप लोगों को careful रहना पड़ता है. Then the second objective was to evaluate the proposed control technique for three-phase BES. BEC is basically bit energy conversion system. So three types of interface she has taken. Number one is PV, that is power photovoltaic. BE is battery energy storage system, and third option that for supplying the power is grid energy conversion system. The microgrid, now come to the point of microgrid and smart grid. Now there are one you are aware as grid. I told you what is a grid. Now microgrid. What do you mean by micro part? You all work in micro and सब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप माइक्रो में ही काम करते हैं. 10 to the power minus. So micro grid is a very small, say localized. आप मान लीजिए अगर आपको IET का ही आपको सप्लाई करनी है तो आप अपना छोटा सा एक सप्लाई सिस्टम बनाते हैं. Now that supply system is independent of the grid. आपने ग्रिड को अलग कर दिया, तो that small part is known
known as microwave. अब इसी में अगर हम communication attach करते हैं, if the whatever data that we are parameters that we are obtaining, if they are getting fed back to the certain control panel, और उसमें हम communication का अगर role ले आते हैं तो that becomes a smart grid. इसको हम लोग smart grid बोलते हैं. That means the power lines which communicate in terms of the power lines and the intelligence system along with the communication. जब तक communication नहीं होगा तो वो आपका intelligence system हो ही नहीं सकता. Every intelligence system is to be fed by certain data. जब तक आप data feed नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी AI use कर लीजिए, you cannot train AI until and unless you have sufficient amount of data. Is it clear? So the smartness comes from the induction of intelligence, and that intelligence comes from communication part. Is it clear? So right now we will deal with only microgrid system. The third objective was to develop an implementation synchronization technique. Synchronization means when say PV is working, it is working at certain level. You have wind energy conversion system, which is another source. You have battery energy storage system, which is another source. So all these three are to be synchronized with which part? Ultimately with, yes, ultimately with grid, because we are interacting with the grid only. So जाहिर सी बात है कि इन चारों का से जो है आपका जो भी synchronization मतलब एक सिंक में चारों काम करें कि एक भी फेल होता है तो दूसरा तुरंत काम करना शुरू कर दे, जिससे कि हमें uninterrupted power supply मिले. To obtain seamless transition between the standalone and grid. अब seamless in the sense कि किसी भी तरीके का hamper ना पता चले कि आपने मतलब intervention हुआ, grid चली गई और एकदम से transients develop होने लगे. So if transients develop, then definitely that may disturb some of the appliances which are connected as a load into the system. तो वो seamless transition होने की वजह से आपका चाहे वो system standalone में काम करे as an independent body, or if it is tied to the grid, in both the modes it will work as if nothing happened. Then validate the results. That means whatever simulation results were obtained, they were validated through hardware prototype. These are the different control strategies which were actually employed in this particular research work. Now, to meet the current energy requirements, these are the basically application part of the project research work that has been carried out. Is requirement and offers viable solutions for diverse consumers, including hospitals. This is the best part. The hospital is one of the areas where you don't prefer to use electricity any. मान लीजिए कि ऑपरेशन चल रहा है या कोई MRI कोई करवा रहा है, कुछ का कुछ हो जाएगा, जिंदा रहना तो उसको उपचार नहीं. तो वो चीज़ नहीं हम लोग मतलब in certain applications we can forego electricity, but in certain applications which are related to basically loss of life and property, then in that situation definitely we are much more bothered about it and we go for कि हमारे पास जितना भी कंट्रोल है वो इतना अच्छा हो कि पावर क्वालिटी बेस्ट मिले, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिले, 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म मिले और अनइंटरप्टेड मिले. ठीक है, तो वन सच एप्लीकेशन इज one such application is hospitals, blood banks, research labs, lighting loads, house loads, electric vehicles. पता चला आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मौके पर पहुंचना था, दिल्ली पहुंचना था 4 बजे और आप मुझे बहुत मीटिंग अटेंड या किसी की शादी में जाना था तो आप पहुंच नहीं पाए समय से और आपका निकल गया. ठीक है. So in that situation also the charging of electric vehicles is the most recent research work which is going on. कि आप कैसे इलेक्ट्रिक वेहिकल की चार्जिंग को इन टर्म्स ऑफ टाइम रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे हम लोग आज मोबाइल जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में चार्ज कर लेते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिक वेहिकल को अगर हम रोड पे जा रहे हैं और आपको अगर कहीं मौका मिलता है उसको चार्ज करने का तो कितनी जल्दी हम उसका चार्जिंग टाइम कम कर सकें, दैट इज आवर एम और द रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दैट पार्ट. Then we have telecom industries, as you all know, मोबाइल आपके जो है क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कार्ड्स हैं, उन सब में लाइटिंग की जरूरत पड़ती है ऑल द टाइम. ऑक्सिलरी सप्लाई से हम लोग उसको लाइट देते हैं जिससे कि जो जितने भी आपके टेलीकॉम टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, दे आर ऑल फेड विद इलेक्ट्रिसिटी. उसके बगैर तो काम करेंगे नहीं.
तो अगर मान लीजिए लाइट चली जाती है और उसके पास कोई बैकअप नहीं होता है, तब आपका तो मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खराब मतलब सिस्टम खराब, तो सांसें काटती हटा जाती है आजकल लोगों को बिना मोबाइल, है ना। तो ऐसे में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। So for that also you require uninterrupted power supply, and we as electrical engineers are responsible to supply that. And various other applications, बाकी तो आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे आपका मशीन टूल्स है, हैवी मशीनरी टूल्स हो, आपके क्रेन्स हो, बॉयस हो, लिफ्ट हो, एक्सेट्रा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। Now additionally the aim is to develop resilient control technique. Resilient means the one which is very rough and tough, that oversee microgrid operation across diverse dynamic conditions. Dynamic conditions जैसे आपका ग्रिड आउटेज हो गया या आपका कोई डिस्टर्बेंस बीच में हो गया, तो उस समय आपका जो सिस्टम है वो सही से काम करे। These are the objectives. These are the chapter-wise control strategies which were developed by the student. And we will see how a PV array-based microgrid with single grid synchronization operation takes place. This is basically the block diagram which we use normally. There are two different types of topologies which has been taken by her. That is single stage solar photovoltaic array. Now in case of single phase, basically we don't use bidirectional DC system. We have certain kind of, now let me explain you the power electronics part थोड़ा सा। आपने इन्वर्टर सुना है, आपने रेक्टिफायर भी सुना। Rectifier is a device which converts AC into DC, right? And inverter is a device which converts DC into DC. ये तो आप लोग जानते हो। एक बीच में दो डिवाइस के और आते हैं, एक कहलाता है आपका चॉपर। चॉपर is basically DC to DC conversion with change in amplitude. दो ही होते हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक फेज पार्ट होता है। तो एम्पलीट्यूड तो चूंकि DC है तो उसमें फेज का कोई मतलब नहीं है। So definitely, when you are converting DC to DC at a certain desired level of magnitude, that is a device which is chopper which converts this kind of conversion. और दूसरा होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है कि साइक्लो कन्वर्टर में आपका जो AC होता है, AC to AC conversion होता है, not in terms of magnitude but in terms of frequency. Say if we have frequency of 50 Hz and we want to convert it into 1/3 part of the frequency or half of the frequency, or we want to double the frequency, that is step up the frequency, then we use cyclo converter. So in that situation we require input as AC and output is also AC, right? So in case of, if we say single stage solar conversion, then definitely we are not using bidirectional DC converter. Bidirectional DC converter is basically a chopper, where we look for कि कैसे आपका सोलर से मतलब सोर्स से लोड में जा सके पावर, और लोड से जब जरूरत पड़े तो हम सोर्स को भी पावर दे सके। तो इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी कि आपको कहीं से तीसरी जगह से पावर नहीं लाना है। So and double stage, then you have double stage, as you can see configuration, the lower power one is the double stage one, where you are using this as a boost converter, BDC, bidirectional converter. Then VSC is voltage source converter, which is basically connected to the grid side. इसमें जैसे वो क्या पॉइंटर पीछे हाँ ये this is voltage source converter, जिसका basically inverter नाम देते हैं। DC यहाँ पे आपको DC लिंक मिल रहा है। This is solar power जो कि जनरेट हो रहा है, which is passing through boost converter, और यहाँ पे डायरेक्ट DC। तो ये boost converter यहाँ पे लगा हुआ है डबल स्टेज में, क्योंकि आप boost converter लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कन्वर्टर लगा रहे हैं along with VSC, that is voltage source converter। जबकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी सोलर पावर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं थ्रू अ कैपेसिटर, DC लिंक कैपेसिटर, और उसको डायरेक्टली कहाँ पे दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में। सो वन कन्वर्टर इज मिसिंग बेसिकली। सो दिस इज सिंगल स्टेज एंड दिस इज डबल स्टेज, इज इट क्लियर? और बाकी आपका वोल्टेज सोर्स जो इन्वर्टर है, इट इज कनेक्टेड टू रिपल आप लोग फिल्टर जाते ही जिससे यूज करते हैं टू डाई आउट सर्टेन रिपल्स। और रिपल्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सिस्टम में, तो इट इज लीडिंग टू जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स। तो उन हार्मोनिक्स को वाइप आउट करने के लिए वी यूज फिल्टर्स, राइट? नाउ दीज ripple filters basically smoothen out the output of the AC output which is available out from the voltage source converter। फिर उसके बाद आप ग्रिड में दे रहे हैं, और ग्रिड में हम ये चाहते हैं कि हम 50 हर्ट्ज साइनसॉइडल वेवफॉर्म दें, ये हमारा टारगेट है। फॉर ऑल दैट वी आर यूजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ मैनुअल
collections, or you can say certain kind of instruments, which are devices which are actually feeding the grid with a power quality supply. Is it clear? So these are the two configurations which have been used by my student. Then this is the architecture of that and the flow chart. DSC control, basically DSC का ही control इन्होंने किया है कि आप switching strategy कैसे आप develop कर रहे हैं कि आपका smooth seamless transition हो between the islanded and the grid connectivity. These were the various control techniques which were employed by us. मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्योंकि उसका रिसर्च होता है तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि she took 11 control strategies to different control strategies and compared the results and validated those results in the hardware form so as to obtain the objectives. क्योंकि ये स्लाइड उसके फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे. These are the different kinds of controls which are used by EPCF control technique, NPR control technique. This is SN is switch mode control technique. Then these were the simulated results. She did the PhD analysis of grid and load power parameters and found with EPCF control technique and without EPCF how much was the grid PhD. Now these are the disturbances between this, as I already told you. थोड़ा सा आप इसमें समझाएंगे. ये आपका एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है कि अगर आपने सडनली लोड को रिमूव कर दिया और या लोड को इंजेक्ट कर दिया सिस्टम में, फिर हमारे पास लोड, जो हमने आपको पहले ही बताया कि लोड इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन फॉर्म. लोड अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि कई बार हमको ये नहीं पता चल पाता है, फिक्स्ड लोड तो होता नहीं. कभी आपको ज़्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ गई, पता चला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मोदी जी का भाषण है, तो अब मोदी जी के भाषण के लिए उसके लिए पूरा आपको एकदम इंतजाम करना है. तो ऐसे में आपके पास पूरी सप्लाई एकदम से कहाँ पे चल करनी है, आपको डाइवर्ट करनी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में. सो दैट लोड इज एट दैट पर्टिकुलर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इंक्रीज्ड एंड दैट इंक्रीज लोड इज टू बी एडजस्टेड बाय अदर एरियाज. तो ऐसे में आपका लोड इंजेक्ट हुआ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और कहीं से उसने हटाया जिससे कि वो लोड डाइवर्ट हो सके. तो यू सडनली रिमूव द लोड and you injected the load back to the system. So there is a disturbance. It is not a normal condition. तब उस केस में how your supply is going to, or how your control technique is going to manage everything without actually creating the transients, basically is the objective. तो इस केस में अगर आप देखें कि आपका यहाँ पे हुआ, लेकिन जो आपकी ग्रिड की पावर है और जो सप्लाई की पावर है वो एज इट इज. ये देखिए ग्रिड वोल्टेज एकदम कॉन्स्टेंट मेंटेन, कोई चेंज नहीं आया बिकॉज ऑफ EPCF कंट्रोल. Then for fast conversion, these are the few basically you will not understand this. Effectiveness of control दिखाया कि कैसे आपका कंट्रोल टेक्निक during voltage distortion काम कर रहा है. This is the voltage distortion which is taking place here. And during DC offset. DC offset क्या होता है कोई बता सकते हैं? What is an offset? Delay. Offset is basically a delay. तो delay मतलब जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट आए, उससे थोड़ी देर बाद. एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि देयर हैज टू बी अ सिंक बिटवीन. इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फास्ट काम करता है बिकॉज इट हैज गॉट मिनिमम टाइम डिले. तो जो टाइम डिले होता है वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. दैट टाइम कांस्टेंट इज बेसिकली अपॉन द कंपोनेंट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स कनेक्टेड एज RLC. कई 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से टाइम कांस्टेंट वेरी करता है. तो जो इलेक्ट्रिकल का टाइम कांस्टेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक से कहीं ज़्यादा होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने सिग्नल दे दिया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका इलेक्ट्रिकल वाला उतने ही तेजी से सिग्नल को कैच करे. देयर इज अ टाइम मिसमैच. तो उस डिले ऑफसेट को हम लोग को देखना पड़ता है कि जितनी देर का वो डिले है उतनी देर का हमारा सिस्टम गड़बड़ा ना जाए. So that is one sort of disturbance which is being created because of the mismatch of the time constant or the delay which is being produced by 2 different kinds of system. अब मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इधर इलेक्ट्रिकल है, इधर मैकेनिकल है. मैकेनिकल का टाइम कांस्टेंट मतलब हाईएस्ट होता है, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का आता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है। तो अब आप ये समझिए कि हमारा कोल पावर है, थर्मल पावर प्लांट है, उसमें तो मैकेनिकल डिवाइसेस भी लगे होते हैं, टरबाइन लगा है, आपका कोल है, कोल फीड हुआ, फीड होके वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होके वो टरबाइन पे पानी बन के गिरा और फिर टरबाइन को चलाया, दैट व्हिच इज कपल्ड विद द जनरेटर व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी लोड की रिक्वायरमेंट सडनली इंक्रीज हुई, उसने जनरेटर ने तो तुरंत, भाई जनरेटर इलेक्ट्रिकल है तो जनरेटर ने तुरंत इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने पावर दे दिया, लेकिन एक्चुअली वो पावर कहाँ से मिलेगा उसको? राइट फ्रॉम फीडिंग ऑफ द कोल, वहां से चलेगा। अब उसने तो दे दिया, देयर इज जनरेटर ने तो कह दिया कि भाई साहब हम तो, हमें तो देना ही देना है, हम क्या कर सकते हैं। जनरेटर कहाँ से लेगा? वो कोल से लेगा। अब कोल के बीच में एक मैकेनिकल पार्ट है, दैट इज टरबाइन। तो टरबाइन की स्पीड और जनरेटर की स्पीड मिसमैच हो गई यहीं पे, और जहाँ स्पीड मिसमैच हुई वहाँ फ्रीक्वेंसी का डिस्टर्बेंस आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई तो आपके पास क्वालिटी में चेंज आया। So that mismatch is to be catered by the control engineers who are present during the site. तो वो क्या करते हैं, बहुत तेजी, जैसी डिमांड आती है, जनरेटर ने पावर फीड कर दिया, अब वो कोल बहुत तेजी से फीड करना शुरू कर, 1000 मेगावाट की डिमांड थी और उसमें 500 मेगावाट आपने ऐड कर दिया, तो वो 500 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेस कोल से ही मीट आउट हो पाएगा। So that is done by basically coal section. तो हर सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं, they are all working in sync, जिससे कि आपको कोई हैम्पर ना इलेक्ट्रिसिटी को। So this is one. DC option basically is pertaining to your delay which is being provided due to the time constant of different systems which are connected. These are the comparative results. PLL is phase lock loop system, base synchronization control technique with the conventional one. These are the results which are obtained. As you can see, proposed technique, the grid current and load current were quite reduced as compared to the conventional technique. This was the hardware prototype which we developed in the laboratory of IET and IEEE. So I think all the results on all the control techniques, the results are more or less same. The concept behind such a kind of research is now come to a genuine topic. You thought the result, ठीक है, research आप जो जैसा कर रहा है उस हिसाब से उसके results, लेकिन जो आपका research का जो वो होता है, objective होता है, that is first of all to be framed. भाई पहले तो आपको ये area decide करना होता है कि in which area you want to work. You work in a specialized manner. पहली बात तो ये है। तो there are so many work already going on in this world. कोई अकेले आप हैं क्या रिसर्च कर रहे हैं या आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके साथी जितने भी पीयर ग्रुप है वो सब पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट व्हाट यू डू इज यू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट वर्क एंड देयर आफ्टर यू कैरी आउट लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे करने से आपको ये पता चलता है कि आपके पहले कितना काम हो चुका है, आपके कंटेम्पररी कितना काम कर रहे हैं, और जो कंटेम्पररी है उन जो काम कर रहे हैं उनमें क्या लैकिंग है, कौन से असम्पशंस को ले रहे हैं, कौन से असम्पशंस वो मिस आउट कर रहे हैं, या तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो काम नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप लिटरेचर सर्वे कर लेते हैं, यू कैरी आउट द लिटरेचर सर्वे, दिस इज अ कॉमन टॉपिक फॉर ऑल द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कि आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे रिसर्च या प्रोजेक्ट किया जाता है। So there are certain fixed steps which are involved. जैसे कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, you go for the subject, you first conceptualize, आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपने बैकग्राउंड जाना, बैकग्राउंड जानने के बाद आपने करंट पढ़ा, और करंट पढ़ने से आपको ये पता चला कि कौन कौन से पार्ट में रिसर्च लैक कर रहा है, और फिर आप उनमें से एक पर्टिकुलर एरिया चुन लेते हैं और आप सिलेक्ट करते हैं, then you move forward for that particular part. So this is how the chain is being done. So literature survey, after carrying out the literature survey, you actually go for identifying the problem areas. Problem area research gap आपने identify कर लिया, and then you decided to go for or solving those issues or challenges which are being developed, right? अब आपने जब एक बार आपका टारगेट फिक्स हो गया, your target is to qualify gate. अब आपको पता है कि गेट क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से
subjects में पढ़ना है, right? Now which subjects you are lacking and which subjects you are strong enough. तो जो strong होते हैं उनको आप simple revise करते हैं, तो it is already a part which is done at a very small in a very small time. लेकिन जब आपके पास मान लीजिए कोई hard subject है जिसमें आप थोड़ा सा lack कर रहे हैं, तो उसको बार-बार पढ़ते हैं. You go on solving the papers again and again so that you remove your drawbacks. और फिर उसके बाद आप जब question series लगाते हैं, तो you find that you are improving day by day in terms of accuracy, in terms of speed. तो ये सारी चीजें ऐसे ही आपके पास जब आप प्रोजेक्ट करते हैं या आप रिसर्च करते हैं, तो you set the targets. Targets are objectives. तो objectives को meet करने के लिए you draw algorithm, you go on for algorithm और step wise आप उसको chalk out करते हैं कि how to carry out my research so that I can obtain my objectives. Is it clear? ये सब करने के बाद फिर आप जो है ultimately अपने काम पे focus करते हैं कि हाँ अब मुझे simulation करना है. This is the circuit diagram, this is the block diagram where I want to do carry out and I want to change certain strategies, control strategies, involve certain things. और you go for देखिए research करने के जो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप research जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उसी में से आपको research करना है. It is not expected that you all the way you give out something very new. यूरेका नहीं करना है, जो करना था वो ऑलरेडी हो चुका है. आपको केवल जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है, उसी में टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, राइट? तो एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स, नंबर 1 एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी, कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं, ऐसा टूल जो कभी नहीं यूज हुआ हो या ऐसा टूल जो ऑलरेडी यूज हो रहा हो उसमें आप मॉडिफाई करें, और या जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उन्हीं का कंपैरिजन करके आप उसमें एक बेहतर टेक्निक निकाल सकते हैं. So these are the certain areas where you can carry out your research work. ऐसे करके आप ultimately your supervisor says कि okay, now the work is done because the comparison has been done. You have already modulated or you have already developed a new prototype, a new development tool. अब आपका काम यहाँ पे खत्म है. This the work of the supervisor to actually recognize the termination of the project work or the research work. Is it clear? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो वेरी इंटीग्रेट. उसके लिए हमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि हम उसको समझा सकें, आपको भी समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्ट आपकी समझ हो जाएगा. So with this I think I'm done with my graduate talk series. General आप not that should be slides only. किसी को पूछना है? अच्छा आप लोग एक चीज पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि आप लोग AI को कैसा समझते हैं? How do you rate AI? Artificial intelligence. Everywhere you are going on with AI catch, वो AI Gemini है, AI Grok है, AI ये है, AI वो है. So how do you find ChatGPT and all? Do you find that it is really fruitful? And if it is fruitful, in terms of what? And if it is not, then why? तुरंत ChatGPT को बोलते हो एक प्रेजेंटेशन बनाना है, काफी अच्छा लगता है कि अपना दिमाग यूज करने लगा. नहीं ऐसे भी आप बता सकते हैं. टर्म्स में देख सकते हैं, एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है. एडवांटेज जैसे कि जैसे ChatGPT वगैरह हम यूज़ करते हैं और लाइक प्रेजेंटेशन बनाना हुआ या हमें कुछ
सर्च करना हुआ तो हमें बहुत कम टाइम में वो मिल जाता है। एंड डिसएडवांटेज ऐसे कि हमारा मिसयूज़ होता है उस चीज़ का, एआई का, जैसे लाइक डिजिटल अरेस्ट, लाइक डीप फेक, ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक्स। लाइक जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई भी टूल डेवलप कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो MRI हो, चाहे वो आपका टेलीकम्युनिकेशन का मोबाइल हो या माइक्रोवेव हो या कुछ भी, तो हर एक का एडवांटेज है, हर एक का डिसएडवांटेज है। एआई का भाई जो जिसके पास दिमाग है तो वो उसको अच्छे सेंस में यूज़ करेगा, और किसी के पास वैसा दिमाग है तो उसको वो एज अ क्राइम भी यूज़ कर सकता है। तो इट इज़ अप टू आवर माइंड टू डिसाइड वेदर वी वांट टू गो फॉर बेटर वन और वी वांट टू गो फॉर अ बैड वन। ये तो आपका ही दिमाग डिसाइड करेगा। इट इज़ योर ओन नेचुरल इंटेलिजेंस व्हिच एक्चुअली डिसाइड्स कि वेदर यू वांट टू यूज एआई इन गुड सेंस और यू वांट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बैड सेंस। ठीक है, तो बेटर मेरा ऐसा मानना है कि सिंस ऑल ऑफ यू आर स्टिल चिल्ड्रन एंड इमैच्योर टू यूज सर्टेन टूल्स, तो आप लोग बहुत केयरफुल रहिए कि जो भी नए नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं उनको यूज करने का तरीका, उनके बारे में पूरी जानकारी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे यूज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस को नहीं जानते कि उसका क्या ड्रॉबैक हो जाएगा, एंड दे गेट ल्योर्ड बाय सर्टेन थिंग्स। उसमें आप फंस जाते हो, फिर उस चीज़ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है, चाहे वो टूल्स के फॉर्म में हो या टेक्निक के फॉर्म में हो या किसी डिवाइस के फॉर्म में हो, तो पहले उसकी अच्छे से स्टडी, गो फॉर द स्टडी कि उसका क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, क्या टेक्निक लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डेटा कहीं और चला जा रहा है, आप अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसका कहीं कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। तो बहुत सोच समझ के आपको चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि nowadays what happens is the tool is like that, it is available in every nook and corner of the world. ऐसा नहीं कि अब रेस्ट्रिक्टेड है कि आपने एक फ़ोटो डाल दी और वो फ़ोटो आपके नॉर्वे में जाके नहीं जाएगी, ऐसा आप गारंटी नहीं दे सकते। एक स्पेन में बैठा बंदा आपको देख सकता है कि आप क्या करते हैं। तो बहुत सोच समझ के, यू आर वेरी यंग, अभी भी यंग माइंड से आप लोग, तो चीज़ों को समझ के ही यूज़ करिए। हम लोग जैसे ऑलरेडी मैच्योर्ड है, तो हम लोग बहुत कम चीज़ें वो करते हैं, यूज़ करते हैं। जो काम की होती केवल उतना ही यूज़ करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। नहीं उतना अट्रैक्शन रहता तो नहीं करते, लेकिन बच्चों में ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है कि जो भी नया आ रहा है वो यूज़ करें। तो इट्स गुड, यू यूज़ इट, नोबडी इज रिफ्रेनिंग यू फ्रॉम यूजिंग, बट द पॉइंट इज कि यू शुड हैव द फुल आइडिया एंड द कंसेप्ट बिहाइंड व्हाटएवर डिवाइस दैट यू आर यूजिंग, व्हाटएवर टूल दैट यू आर यूजिंग, यू शुड बी वेल versed with that, then only apply. Thank you, ma'am, for your insightful expert talk on control of renewable energy-based microgrid system. Your in-depth knowledge has shed light on the crucial role of renewable energy in shaping the future of power management. We truly appreciate for your time and contribution. Now, I would like to request Neera ma'am to present our memento to her. मैं सर खींच लूँगा।